Good evening, everyone. So, dear friends, Bagua concept is very deeper concept. Bagua. अगर हमें बागुआ की नॉलेज हो जाए तो चाहे बॉडी को ठीक करना हो, बॉडी को भी ठीक कर सकते हैं, अपने घर के वास्तु को भी ठीक कर सकते हैं और अपनी रिलेशनशिप को भी ठीक कर सकते हैं. बागुआ is the theory of this cosmic energy. Because as per the acupuncture, हमारी लाइफ में कुछ भी होता है वो एनर्जी से होता है. फॉर एग्जाम्पल, I will give you one example. If you are having good earth element, then you will be having family. Gathering means a big family. If you are having more earth element, then you are having your earth element is stronger. अगर आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग है, अगर आपका स्प्लीन एंड स्टमक स्ट्रांग है, तो आपकी फैमिली बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अर्थ एलिमेंट का अर्थ है गैदरिंग. तो ये थ्योरी केवल ऐसा नहीं है कि अर्थ कम हो गया, ज्यादा हो गया, पॉइंट लगा दो ठीक हो जाएगा. नो. हमारे शरीर में जो अर्थ एलिमेंट कम होगा, हमारे घर में भी अर्थ एलिमेंट कम होगा, क्योंकि हम उसी घर में रह पाएंगे जो हमारे जैसा है. म्यान में वही तलवार जाएगी जो उसमें फिट होगी. आप ऐसे घर में रह ही नहीं सकते जो आपकी कुंडली के प्रतिकूल है, आपकी जन्म कुंडली के प्रतिकूल है. यू कैन नॉट लिव इन द हाउस which is not as per your prakriti, which is not as per your constitution. So Bagua theory is not the theory just for correcting the body, rectification of the body, but Bagua theory is the theory of everything. हर चीज की थ्योरी. Let's see now. Let's try to understand. इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम अपने आंखों पर आ जाएंगे. अभी आंखों की बात बाकी है. अभी मैंने आपको जो अर्थ एलिमेंट का उदाहरण दिया, इट वाज जस्ट एग्जांपल. अब मैं आपको सिस्टमैटिक बताता हूं ना. आई विल टेल यू सिस्टमैटिकली. सो दिस इज द सेंटर. ये सेंटर है. नाउ वी कैन डिवाइड दिस सेंटर इन 8 पार्ट्स. हम इसे 8 भागों में बांट सकते हैं. 1 2. Now we can divide in 8 parts. Or better to make in this way. Upper part is fire, that we know. ऊपर का भाग फायर है. So this is the fire. This is the fire. The lower part is water. Sorry. So this is the water. Upper part is fire. 1 minute.
So the lower part is water. अब फायर का संबंध हमारे नेम एंड फेम से भी है. फायर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द नेम एंड फेम. So if fire is high, the person is running behind the name and fame. Because name and the desire of the name and fame coming from the heart and the small intestine. अगर आपके हार्ट में फायर है, then you are running behind the name and fame. और अगर आपके हार्ट की फायर कम है, तो आप चाह के भी नेम और फेम की तरफ नहीं दौड़ पाएंगे. So you are running towards the name and fame if you are having more fire, but you will not able to get the name and fame if your fire is poor. In the same way, if we talk about the water is connected with the carrier. Water is connected with your carrier. Suppose if you are not able to make your carrier, it means your water element is poor. Definitely, water means kidney and urinary bladder. Water means willpower, that we know. वाटर का मतलब होता है विल पावर, वाटर का मतलब होता है किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर. लेकिन अगर आपका वाटर एलिमेंट कमजोर है, अगर आपकी किडनी कमजोर है, अगर आपका किडनी इसेंस कमजोर है, तो आपको लाइफ में कैरियर बनाने में भी तकलीफें होंगी. एक बार बन गया तो बन गया, बाद में डिफिकल्टी आएगी तो चलेगा. लेकिन अगर अभी आपका कैरियर बनाने का टाइम है, लेकिन आपका किडनी कमजोर है, ब्लडर कमजोर है, तो आप बहुत प्रॉब्लम महसूस करेंगे. बिकॉज वाटर इज कनेक्टेड विद द कैरियर. सो वी कैन ऑल्सो सी, केवल फायर का संबंध आपकी हार्ट की बीमारियों से नहीं. हमने पिछली क्लास में समझा था, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो कनेक्टेड विद द नेक पेन, बिकॉज इन द नेक our small intestine meridian is passing. From the neck, small intestine meridian is passing. So small intestine is also connected with the neck pain. So this is the physical effect. So fire, it means small intestine, fire means heart. And fire making you joyful. Okay. अब किसी को गर्दन में दर्द है तो भी हम फायर को ट्रीट करेंगे, और कोई कैरियर नहीं बना पा रहा है तो भी हम वाटर को ठीक करेंगे. इफ समवन इज नॉट एबल टू मेक द कैरियर, देन विल ट्रीट द किडनी. एंड एज पर अवर बागुआ थ्योरी दैट वी नो, जब हमने आंखों का बागुआ बनाया, व्हेन वी हैव मेड द बागुआ ऑफ द आईज, so the lower part is fire. This is the fire. And the upper part is water. This upper part is water. So this is the point of heart and the small intestine. This is the point of heart and the small intestine. And this is also place of name and fame. अगर आप अपनी लाइफ में नेम एंड फेम चाहते हैं, इस पॉइंट को रोज हीलिंग दीजिए. गिव द हीलिंग टू दिस पॉइंट इफ यू आर desiring name and fame in your life. But if you are not able to make the career and you want to make your right career, then do the treatment on the water. So this is the water, means kidney and UB. As per the Bagua, this is career. तो प्रश्न आता है कि यार यहां से कैरियर कैसे बन जाएगा. इस पॉइंट को दबाया तो कैरियर का क्या लेना देना इससे.
Okay, how this point will affect your career? So answer is this: when you are going to the astrologist and he is suggesting you, okay, wear this, wear that, wear pearl, wear a diamond, and because of that pearl, because of the diamond energy is correcting your body energy and you are getting success. So same thing we are doing, but we are doing with the help of stimulation of point. Now, अब हमने किसी की आंखों को देखा. We have seen the eyes of some person. Okay. Now we are looking the eyes of some person. So these are the two eyes of someone. Now we are finding something abnormal here. अगर यहाँ पर हमें कुछ भी abnormal दिखता है, we are finding something abnormal here inside, then we will declare, oh, this person having the problem in the fire. Problem in fire. हम बोलेंगे कि इसकी आंखों में कोई तकलीफ है, इसकी आंखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. The person is suffering with the problem of fire. I will try to show you with the help of one image. Let's see now. We have already discussed about the eyes, the 5 wheel theory. 5 व्हील्स की थ्योरी को हमने समझा था. अब हम थोड़ा सा उस थ्योरी वाले एक डायग्राम को लेते हैं and we'll take the diagram of that 5 wheel theory and we'll try to understand something with the help of 5 wheel theory. Let's see now. Give me 1 minute. So look at this image. So as per the Bhagavad theory, this is the inner circle. This is the inner circle. This is the middle circle and then the outer circle. Okay, हम ये 3 सर्कल की बात अभी नहीं कर रहे हैं. Now our focus is here that we are discussing that this is the point of fire. हमारा ये point है fire का. This is the point of fire. So if we are finding some abnormality here, अगर हमें यहाँ पर कोई भी abnormality दिखती है आंखों में, हम पेशेंट की आंखें खोल के देखते हैं, हमें वहां पर कुछ भी ब्लू वेन्स दिखे, पर्पल वेन्स दिखे, रेड वेन्स दिखे, कैपिलरीज दिखे, तो हम डिक्लेयर करते हैं that your heart or small intestine having some problem. You might suffer with the problem of the heart, or you might suffer with the pain in the neck, because the small intestine is connected to the neck pain, shoulder pain and all. तो ऐसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनर बागुआ तो अंदर से ही स्टार्ट हो जाता है. इनर बागुआ की क्लास बात हम आगे की क्लास में करेंगे. हम तब बागुआ को 3 भागों में बांट देंगे: इनर बागुआ, मिडिल बागुआ, आउटर बागुआ. तो इस तरह से आंखों को देख के समझ में आ जाता है, भाई इसको तो हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, यहां पर एक हल्की सी यहां पर ट्रीटमेंट दो, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी. सो गिव द ट्रीटमेंट हियर and you will rectify the problem of the heart. Not only here, we can give the treatment at many places. We can give the treatment in the palm, we can give the treatment in the feet, we can give the treatment in the scalp, just with the acupressure or with the acupuncture as per our own choice. तो ये हमने पता कर लिया कि इसको तो कहाँ प्रॉब्लम है. इसको तो प्रॉब्लम है हार्ट में या स्मॉल इंटेस्टाइन में. Now let's see. अब किसी को
किसी को लाइफ में नेम एंड फेम नहीं मिल रहा है, तो देख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके इस भाग में कोई तकलीफ हो. द पर्सन इज हैविंग सम प्रॉब्लम हियर. So if the person is not getting name and fame, then we can treat this area. Let's see now. So look at this image now. So this is the place of fire, and we are looking something abnormal here. Something abnormal here. अब यहां पर आपको रेडनेस दिखे. इफ यू फाइंड द रेडनेस हियर, then it is the sign of excessive heat in the heart or excessive heat in the small intestine or inflammation of the neck causing excessive heat in the small intestine. अगर किसी के गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का इन्फ्लेमेशन है, तो उसको यहां पर रेडनेस मिलेगी. And some other person having purple color here, if someone is having the purple color here, purple color means very strong blockage. The meaning of purple color means very strong blockage. So this person might suffer with the severe heart problem, chronic heart problem, chest pain, or this person might suffer with the very chronic cervical spondylosis. अगर किसी को यहां पर पर्पल कलर का स्पॉट दिखता है, आप आंख खोल के देखिएगा तो उसको गर्दन में तकलीफ मिलेगी या हार्ट में. हम आगे उसका फर्दर और डिवीजन करेंगे और हम पालेंगे कि भाई इसको हार्ट में है कि गर्दन में, वो भी हम समझ जाएंगे. अभी इतना तो पता चल गया कि भाई इसको तो प्रॉब्लम हार्ट में है, इसको तो प्रॉब्लम गर्दन में है. आगे फिर इनमें से भी एक चीज कैसे पहचाने, तो वो आगे समझ लेंगे. We will understand how can we will tell the patient, okay, you are having the problem in your neck. Then patient will tell you, yes doctor, you are absolutely right. Now what to do? Patient बोलेगा, हाँ सही बात है, आपकी बात सच है. और अगर किसी के बॉडी में, अगर किसी के हार्ट में बहुत गर्मी है, तो आप यहां पर काजल लगा दो, गर्मी कम हो जाएगी. अब रेड कलर का काजल तो नहीं लगा सकते, क्योंकि नहीं तो आप भूत जैसे लगोगे. कोई लाल लाल आंखें लेके कहीं चले गए तो कोई समझेगा घोस्ट आ गया. तो बेटर टू स्टिमुलेट द पॉइंट with the help of needle or with the help of just a finger. केवल उंगली से भी आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकते हो. So this was the first point that okay, disconnect हो गया था. Am I audible? Am I audible? मेरी आवाज इसके पहले आ रही थी ठीक से, थोड़ी देर पहले? ओके फाइन. बलजीत जी आपने ज्वाइन कर लिया? बलजीत जी चलिए बढ़िया, अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड. ओके फाइन. अब हम बताते हैं कि आपके पास कोई आएगा कि यार कैरियर नहीं बन रहा है, क्या करें? व्हाट वी कैन डू? वी आर अनेबल टू मेक द कैरियर. ट्रीट द वाटर एलिमेंट. और सिंपल सी बात है, if water element will be good, then your kidney will be good. If your kidney will be good, every boss want the person who is little stable. कोई भी बॉस ऐसे एम्प्लॉय को क्यों हायर करेगा जो खुद बहुत ज्यादा बिना रूट्स का है. The meaning of kidney that you are having your roots, you are having your foundation. So the water element means foundation. Now we are going on the upper side. अब हम ऊपर जा रहे हैं, अब हम अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं. Now we are talking about the
Now we are talking about the kidney and urinary bladder. So let's see now in this image. Now we are going in the upper direction. This point, this is the area of kidney and urinary bladder. This area is for the carrier. If you are stimulating this area every day, it means, what is the meaning? It means like you are making your kidney and urinary bladder stronger. आप अपनी किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रोंगर बना रहे हो. And slowly you will see that your bones becoming stronger because kidney is connected with the bones. So now, अब हम क्या करेंगे? हम व्यक्ति की आंखों को देखेंगे खोलकर. We will see the eyes, and after seeing the eyes, if we are finding something wrong here, अगर यहां पर कुछ पर्पल स्पॉट्स दिख रहे हैं, we are finding the purple spots here. Number 2, we are finding the red spot here, red spot. तो रेड स्पॉट बताते हैं कि किडनी में गर्मी ज्यादा है, किडनी हैविंग हीट इन किडनी. और पर्पल स्पॉट बताते हैं कहीं भी पर्पल कलर होगा तो समझ जाना कि बहुत बड़ा ब्लॉकेज है. द पर्पल स्पॉट इज टेलिंग यू द वेरी ब्लॉक्ड एनर्जी. तो लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम द रेड कलर फर्स्ट. चलिए रेड कलर से बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द रेड कलर फर्स्ट. So if we are finding the red color here in the kidney area, maybe the red color veins here, तो समझ जाओ कि किडनी में हीट ज्यादा है. अब किडनी में हीट ज्यादा होगी तो क्या होगा? इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण समझिए. आपकी एक बर्तन में घी रखा है, घी, और गर्मी ज्यादा होगी तो क्या होगा? घी पिघल जाएगा. Like you are having cow ghee, you are having ghee in one metal utensil. But if there is a more heat, then what will happen? Then the ghee become dilute. So if there is a more kidney heat, person will suffer with infertility, impotency. Why? Because the semen will become very diluted, no strength. Even the secretion of the male and female having no strength, because virya, jing is like a ghee. Jing is like a very dense ghee stored in one place as a treasure. Now, but heat is more, so it will be diluted and it will be spilled out. तो जब भी कोई पेशेंट बोले कि यार आप क्या नपुंसकता का ट्रीटमेंट करते हो, तो पहले किडनी की गर्मी कम करना. Treat the kidney heat. That's why if you see in the TCM, kidney 2 is the very good point for impotency. Why? Because kidney 2 is the fire point. किडनी 2 फायर पॉइंट है. किडनी में से गर्मी निकालो. आप ऐसा समझ सकते हो कि क्या हो कि अंटार्कटिका में जहां बर्फ ही बर्फ होती है, सडनली वहां गर्मी बढ़ जाए तो क्या होगा? तो सारी बर्फ पिघल जाएगी. If there is a more heat rising suddenly in the Antarctica, there is all around only ice and ice and ice. So what will happen? Suddenly all ice
will be diluted because of the heat. In the same way, the jing and the virya is stored in the kidney like a very dense form, like a ghee, and dense than the ghee. But if there is a higher heat in the kidney, then virya will be diluted and the person will suffer with impotency, with the erectile dysfunction, and the female also will suffer with infertility. तो किडनी हिट को ठीक करना जरूरी है, इसीलिए कहते हैं कि जिंक और वीर्य को बचा के रखना चाहिए। जिंक और वीर्य को यानी बचा के कैसे रखो? तिजोरी में रखो, जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करना। एक डॉक्टर जू है, डॉक्टर जू इन द फॉरेन, वो स्कल्प एक्यूपंक्चर करते हैं, और जब वो स्कल्प एक्यूपंक्चर करते हैं, पैरालिसिस के पेशेंट को वो ट्रीट करते हैं। ही डू स्कल्प एक्यूपंक्चर फॉर द पेशेंट ऑफ पैरालिसिस। जब वो स्कल्प एक्यूपंक्चर करते हैं तो पेशेंट को सैटरडे संडे को छुट्टी नहीं देते, अदरवाइज द पैरालिटिक पेशेंट विल गो on home at Saturday and Sunday and will involve in the sexual activities and will lose the jing, because he has seen the person is going on the weekend, and when he is coming back on the Monday, he is coming back with more illness. Why? Just because of losing the jing. So you are having jing. Now when you are ill, you have to use this jing for your healing. But when you are healthy, then you can use your jing as per your desire. तो हमारे शरीर में जो जिंग होता है, वीर्य हम कहते हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर में हम उसे जिंग कहते हैं। अगर आपका जिंग अच्छा होगा, आप तुरंत ठीक हो जाओगे, लेकिन जिंग कमजोर होगा तो इतनी सी प्रॉब्लम को ठीक होने में भी महीनों लग जाएंगे। इसी कारण तो डायबिटीज के पेशेंट ठीक नहीं होते जल्दी, बिकॉज डायबिटीज के पेशेंट का जिंग कमजोर हो जाता है। जिंग कमजोर हो जाता है इन द डायबिटिक पेशेंट, जिंग बिकम वीकर। गॉट इट? सो नाउ इफ यू वांट टू इंप्रूव द जिंग, अगर किसी का जिंग ज्यादा होगा, समझो यू आर लुकिंग वेरी ऑसम, like you are having very good jing, and you are going for the interview, then anyone can hire you because you are looking so awesome, and you are looking jing, you don't have jing, eyes has gone inside, shrunken eyes, you are like this and going for the job, then okay, the person will understand that you don't have that stamina, because kidney means stamina. Okay, so now we are seeing the eyes. Oh, you are having some problem in your water element. You are having some problem in your water element. So we can even do the prediction. And then if the person having problem in the water element, then we can take the needle and we can put on the border of eye orbit. So this is the border of eye orbit. This is the border of eye orbit. Points are available on the border of eye orbit. और किडनी अच्छी होगी तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, even you are going to have a very good sleep. Okay, so when you are going for an interview, whether you are going for the interview for the job, or you are going for the interview, or you are going for the selecting couple for the marriage, then first you put the kidney point, improve your jing, improve your vitality, then you can go anywhere. Let's move ahead and see other point. अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अब आपने कहा यार हमको निडल नहीं आता, कोई बात नहीं, आप निडल ना लगाओ। हमने तो कितने लोगों को निडल नहीं लगाई और उनको बहुत अच्छा फर्क पड़ा। Just press the point, this point. If you just want to do the acupressure, just do the massage. Wow, it is giving awesome feeling, wonderful. Or do the massage here.
awesome. You will feel like sleeping because it is relaxing your kidney. Okay, so let's move ahead. अब हम आगे बढ़ते हैं. So let's see the image of eye once again. So look at this image. Now we are moving ahead and looking the next point. So as per the Bhagavad concept, we have already understood that this is the earth and this is also earth. This is also earth. ये दोनों अर्थ हैं. Okay. So this earth and this earth, both are earth. And what is the meaning of earth? Earth का मतलब क्या है? The meaning of earth is spleen and stomach. The meaning of earth is gathering, collection. So when any tree having lots of fruits, so the collection of fruits, we are telling, okay, good earth. तो जब एक पेड़ के पास बहुत सारे फल होते हैं, हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा अर्थ है. In the same way, when some person having good luxury, like very good home, car, money, then we are telling, okay, the person is very prosperous, and the prosperity is the sign of earth. Okay. So the meaning of earth is gathering and collection. You have collection of many, too much money, and you are having collection of fruits. You are gathering of many fruits. As per the 5-element cycle, the meaning of earth means pause. Because yang is rising, yang is rising. Then suddenly pause is there, suddenly stability is there, suddenly break is there because of the earth. yang का मतलब है बढ़ना बढ़ना बढ़ना, और जैसे अर्थ एलिमेंट आता है तो हम कहते हैं अब लाइफ थोड़ी स्टेबल हो गई, ब्रेक लग गया. सो द मीनिंग ऑफ अर्थ इज मींस स्टेबिलिटी. ओके, सपोज दिस इज योर ब्रेन. ये आपका ब्रेन है, and there are lots of thoughts, multiple thoughts. Now sudden break on the thoughts, sudden break on thoughts, and stable mind, that is also earth. तो जब भी किसी का स्प्लीन और स्टमक कमजोर होता है तो माइंड बहुत जंप करता है, क्योंकि अब कोई पॉज नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं. देयर इज नो स्टेबिलिटी. सो इफ यू वांट टू गेन द नॉलेज, if you want to improve your memory, then improve your spleen and stomach. So
एज पर द बागुआ थ्योरी, ये जो अर्थ एलिमेंट है इसका संबंध है नॉलेज से एंड डेफिनेटली स्प्लीन एंड स्टमक से. दिस अर्थ एलिमेंट इज कनेक्ट विद द नॉलेज एंड स्प्लीन एंड स्टमक. तो अगर आप स्प्लीन और स्टमक को मजबूत करोगे तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी और आपके शरीर में भी, आपके माइंड में भी जंपिंग रुक जाएगी. So the meaning of spleen is collection. The meaning of spleen and stomach is collection. So when spleen is poor, then person is collecting fat and getting overweight. अगर किसी की स्प्लीन कमजोर है तो व्यक्ति फैट इकट्ठा करता है और मोटा हो जाता है, तो व्यक्ति ऐसा हो जाता है. So this is the spleen obesity. Earth element obesity. Person is becoming like this. This is the earth element, the poor earth obesity. ऐसा व्यक्ति हो जाता है. आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा. They become like this, overweight. Even they become more. The shape will be from the lower side, they will be become bigger and bigger and bigger. अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखता है तो समझ जाइए कि इसका अर्थ एलिमेंट कमजोर है. You have to strengthen the earth element. You have to increase the spleen and stomach. So if the earth element is poor, the person will collect fat. But if earth element is strong, then person will be having good muscle. Ultimately, gathering is there. Whether you will gather the muscle or you will gather the fat. अगर आपका अर्थ एलिमेंट अच्छा है तो आप मसल को बनाएंगे, आपकी मसल अच्छी होंगी. और अगर आपका अर्थ एलिमेंट कमजोर होगा तो आप ऐसे हो जाएंगे एप्पल की तरह. एप्पल, इसे बोलते हैं ओबेसिटी, ओवरवेट. अब कोई व्यक्ति आके कहेगा कि कैन यू डू समथिंग फॉर माई ओवरवेट? ट्रीट द अर्थ. Can you do something for my fat? Treat the earth. Okay, I want to improve my muscle. Okay, treat the earth. अरे मुझे मसल स्प्रेन हो गया है. Treat the earth. So now we are going in the eyes. So look at the eyes. Now we are again making the bagua here. So we are making the one vertical line, one horizontal line, and two lines like this. So this is the fire. This is the fire. Fire means red. This is the water. Water means black or dark blue. अब बात आती है अर्थ की. So now, अर्थ कहां पर होगा? Now we are talking about the earth. Earth will be this side. So now we have to see the earth element here. Earth element just next to water. Just next to water. अगर आपको देखना है तो एक बार फिर से इस इमेज में देख लीजिए. ये है, sorry, earth element is just next to fire and next to water. So this is the fire and this is the water. Earth element is here and earth element is here, next to water, next to fire. तो हमारा अर्थ एलिमेंट कहाँ होगा? This is the earth element and this is also the earth element. ये दोनों अर्थ एलिमेंट. So these two will be the earth element, and with the help of these points we can improve the earth element. इन दोनों से हम अर्थ एलिमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं. अब एक चीज बताइए, चलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति आके आपको बोलता है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है. no one is ready to marry me.
तो कौन सा एलिमेंट गड़बड़ है, सोच के बताइए। एक व्यक्ति आपको बोल रहा है यार मेरी शादी नहीं हो रही है, कोई मुझसे जुड़ना ही नहीं चाहता, कोई मेरे साथ गैदरिंग करना ही नहीं चाहता है, नो वन इज वांट टू गेट अटैच्ड विद मी. So this is the poor earth element. If you improve the earth element, then the person will get married, because the marriage means earth. अगर आपका अर्थ एलिमेंट अच्छा है तो आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, आपकी मेमोरी रिटेंशन बहुत अच्छा होगा और आपकी मैरिज हो जाएगी. लेकिन हो चुकी है तो नहीं होगी, नहीं तो आप बोलो यार मेरी तो पहले से हो चुकी है, अब कहीं मैंने वापस स्प्लीन स्टमक को स्टिमुलेट कर दिया, अब कोई वैकेंसी नहीं है. So your family life become very happy because earth element means you are having the energy of gathering. आपके पास एनर्जी, गैदर करने वाली एनर्जी है. यू आर नॉट रनिंग जस्ट बिकॉज, अगर आप सिर्फ दौड़ते रहते हैं, if you are just running means you cannot be with the family. So improve the earth element if you want knowledge or if you want family. अगर आपको मैरिज करना है तो अर्थ एलिमेंट को इंप्रूव करिए. और इतना ही नहीं, अगर आपकी फैमिली का कोई व्यक्ति दूर भाग रहा है, उसको वापस लेके आना है, तो भी उसका अर्थ इंप्रूव करिए. You have to improve the earth element of someone. So the Bagua theory is not working on body, but Bagua theory is also working on all the aspect. Okay, सब पर काम करती है, करके देखिए. So now, क्या आपको समझ में आ रहा है सभी को? Is it clear to everyone? कि why we have to improve the earth if we want to do marriage? Clear? बहुत ज्यादा कुछ थियोटिकल टाइप का तो नहीं लग रहा कि इधर है ना कुछ. ओके, समझ में नहीं आ रहा आपको, है ना? नो एनएन. चलिए, एक दो लोगों को नहीं समझ में आएगा तो अच्छा रहता है. चलिए फाइन. सो लेट्स डू द ट्रीटमेंट ऑफ अर्थ. तो चलिए हम अर्थ एलिमेंट का ट्रीटमेंट करते हैं. सो लेट्स डू द ट्रीटमेंट ऑफ अर्थ एलिमेंट. तो पहले हम बनाते हैं एक अर्थ एलिमेंट का. वी विल सी द बागुआ हियर. So this is the vertical line, horizontal line, oblique lines. Okay. So this is the fire. This is the water. And in between earth, this whole is earth. So earth means spleen and stomach. Earth, spleen and stomach. Especially this earth is connected with the knowledge or retention of memory. And this earth is connected with the marriage or gathering of family. Gathering of family. आपके खोए हुए लोग वापस आ जाएंगे. Okay. So the earth near the fire gather, make them do the marriage, and earth near the water, it is improving your memory. तो चलिए अब हम आंखों में देखते हैं. So look at here in the eyes. अब ये थ्योरी समझना से क्या फायदा होगा? जब इसी चीज को हम अलग अलग जगह अप्लाई करेंगे
तो नॉलेज हमारे पास होगी, बस हमको पॉइंट को स्टिमुलेट करना होगा. सो लेट्स सी नाउ. सो मेकिंग द 8 लाइन्स. The lower is fire. The lower line is fire. And cycle is going like this. Remember, cycle is going like this. Lower is fire and upper is water. So this earth, so this is the fire. So earth near the fire, this is connected with marriage and family. And earth near the water is connected with retention of memory. Retention of memory. ओके, तो ये दो अर्थ हैं हमारे पास. और अर्थ का मतलब है, द मीनिंग ऑफ अर्थ इज स्प्लीन एंड स्टमक. स्प्लीन एंड स्टमक. तो अगर किसी पेशेंट का अर्थ एलिमेंट देखना हो कि क्या इसका अर्थ एलिमेंट ठीक है कि गड़बड़ है, इफ यू वांट टू सी द अर्थ एलिमेंट ऑफ एनी पेशेंट, सो लुक एट हियर. ओके, मेक द एक्सिस. ये एक्सिस है. देन साइकिल इज मूविंग लाइक दिस ऑलवेज. तो फायर के बाद तो अर्थ आता ही है. So this is the fire, and after that this is the earth. So look at this area. अगर इस एरिया में कुछ भी गड़बड़ दिखे तो समझ जाना कि इसका स्प्लीन और स्टमक गड़बड़ है. The spleen and stomach having some problem. The person might having some problem in the family life. उसको फैमिली लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम है. हो सकता है कि सेपरेशन की बातें चल रही हों, और अगर किसी की फैमिली में सेपरेशन की बातें चल रही हों, आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करके कुछ बेहतर कर सकते हो. यू कैन डू समथिंग बेटर. एंड इवन इफ यू वांट टू रिड्यूस द ओवरवेट, you can reduce the overweight by using this point, because this point is creating obesity like this. Okay, and the upper point is fire. ये upper point is water. ये हमारा water point है. This is the water. और हमने बताया था कि अर्थ एलिमेंट एक्सिस बना रहा है. So this is also earth. So look at this part of the eyes. आंखों के इस पार्ट को देखिए. अगर इस पार्ट में कोई तकलीफ है तो वो भी स्प्लीन और स्टमक की है. And this earth element is connected with the knowledge and retention of memory. And we have to definitely stimulate this point as well. अगर हमें ओवरवेट कम करना है, हमें स्प्लीन को ताकत देना है. If you want to strengthen the spleen, if you want to reduce the overweight, so we have to also work here on the spleen and the stomach. So if someone want to strengthen the muscle, आप ट्रीटमेंट दे दो यहाँ पर. So now how to do the treatment? Look at here. So let's do. अब हम ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? अब मैं आपको बताता हूँ where we are going to treat. So look at this. This is the bony part. So we are going to insert the. अगर हम एक्यूप्रेशर करेंगे तो भी हम ये बोनी पार्ट पर करेंगे. We will do the acupressure here in the bony part, and we will do the acupressure here in the bony part here. ये बोनी पार्ट पर ही हमें एक्यूप्रेशर करना होगा. We will do the acupressure here in the bony part for spleen and stomach. So let's see now.
अब हम आपको दिखा देते हैं, लुक एट हियर। So this is the fire. Now we are going inside. This is the earth. If someone is telling you, oh, I am having muscle sprain. Okay, no problem. Treat here. Look at the eyes. Oh, this eye is okay. Okay, no problem. Oh, this eye is having some vein, red vein. So treat here. So look, take the needle or put here in the eye orbit. Very superficial needle. Or do the just pendulum movement here gently. Do just pendulum movement. If you do the pendulum movement here, you will able to remove the muscle sprain pain, and you will balance the overweight, obesity. You will balance the spleen and stomach. So because you are balancing the stomach, so this also will balance the digestion. आपका digestion भी ठीक हो जाएगा. Now, this is the water point. Now we are going next to water, that is the earth. So if we are treating here, this is also the earth element on the border of bone. ये भी हमारा earth element है on the border of bone. और ध्यान रखिएगा इन दोनों अर्थ में अंतर है, उस अंतर की बात हम करेंगे आगे. बागुआ थ्योरी में कहें बोथ आर अर्थ, बट उनके भी अलग अलग नाम दे दिए गए हैं. एक को कहते हैं अर्थ और दूसरे को कहते हैं माउंटेन. वो हम समझेंगे आगे. माउंटेन और अर्थ दोनों एक ही हैं, लेकिन बाद में फर्दर डिवीजन है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि माउंटेन कब यूज करना है और अर्थ कब यूज करना है. So in the Bagua theory, we have given the separate name. But right now, we are considering both are same as a spleen and stomach, as a spleen and stomach. Because slowly we will go in the step 2 and step 3 aspect. So spleen is also connected with the pancreas. अब आप बोलोगे कि pancreas को कहाँ ट्रीट करेंगे? Where is the pancreas? Where is pancreas? Okay. So spleen and pancreas are the same. जो भी डायबिटीज के लोग होते हैं उनके जरा नीचे वाले पोर्शन में देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगी. The diabetic patient having the problem in the lower inner part here. In the lower earth element. Okay. Because as per the acupuncture, spleen and pancreas both are coming in the same element. तो जब हम आपको स्प्लीन मेरिडियन कहते हैं तो आप उसको पैंक्रियाज मेरिडियन भी समझ सकते हैं. और पैंक्रियाज का काम क्या है, कौन बताएगा? नंबर 1, पैंक्रियाज का काम है सिर्फ शुगर को कंट्रोल करना. नंबर 2, पैंक्रियाज का काम है खाने को पचाना. एंड नंबर 3, बोथ. व्हाट इज द आंसर? पैंक्रियाज का काम है इंसुलिन को बनाना और खाने और ग्लूकोज को कंट्रोल करना. नंबर 2, पैंक्रियाज का काम है खाने को पचाना. एंड नंबर 3, बोथ. क्या आंसर है? व्हाट इज द आंसर? द वर्क ऑफ पैंक्रियाज, नंबर 1, just controlling the glucose while secreting the insulin. The second, pancreas is digesting the food. And number 3, both. Okay. So what is the answer? Answer is both. Pancreas is secreting 3 enzymes: lipase, amylase, trypsin. With the help of 3 enzymes, lipase is digesting the fat, amylase digesting the carbohydrate, and
trypsin digesting the protein. So pancreas also help for the digestion, and pancreas also secreting the insulin for sugar control. So pancreas play a very important role not only for the sugar metabolism but also for digestion purpose. पेंक्रियाज दोनों काम करता है. पेंक्रियाज जो एंजाइम बनाता है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, वो हमारे पाचन में मदद करते हैं. लाइपेज तो फैट को पचाता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है और ट्रिप्सिन हमारे प्रोटीन को पचाता है. और इंसुलिन हम जानते ही हैं, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. तो पेंक्रियाज हैविंग वेरी बिग रोल, a very important role. Okay. So pancreas can be divided in two parts. One is exocrine part, one is endocrine parts. Exocrine part digesting the food and endocrine parts controlling the sugar. Okay. तो जब हम नीचे वाले एरिया को देखते हैं तो हमें डायबिटीज के बारे, हमें पेंक्रियाज की कंडीशन के बारे में पता चलता है. तो अभी कोई डायबिटीज का पेशेंट आएगा, सो आपको चेक करना होगा कि इसके लिवर में प्रॉब्लम है, कि इसके किडनी में प्रॉब्लम है, कि इसके पेंक्रियाज में प्रॉब्लम है. क्योंकि डायबिटीज हमेशा पेंक्रियाज की खराबी से नहीं होती है, ध्यान रखिएगा. डायबिटीज कभी कभी दूसरे ऑर्गन्स की खराबी से भी होती है. द ऑलवेज पेंक्रियाज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायबिटीज. ओके, सो नाउ again repeat. I have repeated. Okay, would you like to, shall I repeat again? Okay. So in this way, हम समझेंगे, हमारे क्रम से आने तो दीजिए. हमारा जब स्प्लीन का टॉपिक आएगा तो स्प्लीन में हम सब समझेंगे, सारे प्रोटोकॉल समझेंगे. अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी मैं आपको प्रोटोकॉल बता दूंगा तो हम प्रोटोकॉल सबके समझेंगे. हार्ट के प्रोटोकॉल, स्प्लीन के प्रोटोकॉल, सारे प्रोटोकॉल एक एक करके समझेंगे. We are going to understand all the protocol one by one. Okay, in the sequence, in the systematic way. I don't want to jump here and there and there and there like that. Okay. Okay, fine. तो चलिए आज के लिए इतना काफी है. पहले धीरे धीरे हमारी गाड़ी चल रही है, अब आगे धीरे धीरे स्पीड अप करेंगे, है ना. आंखों में बहुत कुछ बाकी है. थोड़ा सा आप लोग फैमिलियर हो जाइए, फिर हम आपको और डीपर एस्पेक्ट में ले जाएंगे. ओके, सो इनफ फॉर टुडे. अब हम मिलते हैं मंडे को. ओके, थैंक यू सो मच. सो क्लोजिंग.